So this is good morning to everyone on the YouTube, and let us try if we can just bring it around. Not familiar. Yeah, I think वो दूसरा वाले Google account से चलो कल कर लेंगे अब पता लग गया ना Yes, ma'am, कल करेंगे. क्योंकि दोनों ही छुट्टी के दिन है Saturday is a fun day and then Sunday is a fun day holiday also. Yeah. Okay. So yes, Dishant will give you something to read today for sure. There was a little article I had written during COVID, very nice, realizing the importance of living freely like that कि कहीं पे भी जा सकते हो, मॉल जाना है वहां जा सकते हो. तो उस context में I had written an article during the COVID, so I'll make you read that today. So right now we start with our fresh chapter number 1, which is Count My Blessings, which is actually a very powerful way to start the day. And Nishant is also reading magic. Who? Neetu is very generous, you know. Dishant will be reading magic also. Oh, really? Back the stage, ये सब हो चुका है. Yes, ma'am. अरे, Dishant? Ma'am, I will teach you how to manifest next time. Right. किसी से छीन के किसी से छीन के मैनिफेस्ट कर लो, ये कैसा मैनिफेस्टेशन है? अब I'm missing Neetu's reading. What do I do? Ma'am, I will. हम उसके लिए कुछ और No, बन जाएगा. Dishant has actually come to my rescue. He was just meant to read. अच्छा हाँ, you also now support him. This is an alliance of sorts happening here. Okay, so chapter number 1, which is Count My Blessings, the most powerful way to kickstart the day. And this actually starts wiring in gratitude into our lives. And in the image that we can see here is that jo mundane day hota hai, chai peete peete, there are flowers, there's a beautiful sunshine coming from outside. Journal rakha hua hai. So start your day early in the morning by counting the blessings that we have in our life, because people spend their lives just complaining about things, but we don't realize that हजार ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हमको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास हैं, which make our life so much more easier. So this is what this chapter is all about, and doing it early in the morning is something that will start transforming the core of our life, fundamentally. So yeah, yes, Dishant, let's start reading. Hi, good morning everyone, and good afternoon, and also good evening. So day 1, count your blessings. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, singer-songwriter. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. When you are grateful for things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more. And all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things
when we criticize or find fault with our people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out the blessings that were on their way. I've tried both, counting my blessings and counting my negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. I unquote Maltby D. Babcock, writer and clergyman. First thing in the morning, or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or a journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you're going to make a simple list of 10 blessings in your life that you're grateful for. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have what, because, why. I'm so happy and grateful for what, because, why. I'm truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as possibly you can. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, the God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct your gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. The practice of counting your blessings is so simple and yet so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things that you're grateful for every day, but the more you think about it,
the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passion, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. A magic reminder for you: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. So here we are, magic practice number 1: count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you're grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words: thank you, thank you, thank you, and feel
the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 years, next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. Yeah, thank you so much. This is all we have in this chapter. Thank you so much, Dishant, नीतू से छीनने के लिए ये वाला रीडिंग चैप्टर. इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. ये मैंने सिखाया है तुमको. Somebody is eating a burger. उसको मैं बोल दूं, can I have your burger please, out of all the goodness that person gives that to me, and I say yeah, I manifested it. उसका क्या? Manifestation means you also eat 2 burgers, I also eat 2. It is like that. Ma'am, But Neetu beautiful, had very a good way of manifesting. Baka, keep Neetu it up. had ये a तुमने bad next fraud. 27 days पढ़ा है, so it will be next 27 years you read it, right? So next 27 years you have to be in gratitude practices minimum, Yes, yes, ma'am. right? Okay. So here we are at chapter number 1, which is assignment number 1. So, I mean, मुझे ये लग रहा है कि Rhonda Byrne को हमको समझाना पड़ रहा है that see, you can be grateful for the air, look, you can be grateful for the rain, for your planet Earth, you know, for your health, for your 5 senses. So this is where we start from, right? I mean, हमको पता ही नहीं होता कि हम किन किन चीजों के लिए thank you बोल सकते हैं, because हम इतने complaints से भर जाते हैं अपनी जिंदगी में. So this is from Willie Nelson. When I started counting my blessings, my whole life turned around. In fact, Oprah Winfrey has said in the concluding chapters also, no, when I started counting my blessings, my bounty started increasing, opportunities came, money started flowing in, career opportunities, career accelerated, and all of that, the health got better. So this is how it actually works, right? So whatever we are grateful for, वो चीज हमारी जिंदगी में expand होती है. बहुत पावरफुल एनर्जी होती है. एंड इनिशियली ये लिखा हुआ था जो हमने कल पढ़ा था, दैट इनिशियली इट जस्ट जो मैजिक फॉर्मूला है, दैट फर्स्ट वी नीड टू काइंड ऑफ से थैंक यू. It could be very, very mechanical without any feelings at all. Because for some things that we've been taking for granted for so many years, उसके लिए maybe पहली बार, second time, third time, maybe 2 months, 3 months उसके लिए feeling नहीं आती है. You know, धीरे धीरे this gratitude की feeling sink in होती है. It might take a while, it might take 6 months, it might take 1 year, whatever. But that's how we all have begun, you know, initially just to say thank you to the walls of the house. It might just look, because we've never really said thank you to the walls of the house. So, but it works two way, you know, like it is also जिस भी चीज को या जो भी situation को हम thank you बोलते हैं, वो respond करती है immediately, because energy wise, of course, whatever you sow you reap, right? So जब जैसे हमने अगर walls को भी thank you बोला ना, it is listening. There is nothing which is not alive in this world, right? Everything has life in its own form, in the form of electrons moving around the orbits. अगर उस तरह से देखें, चाहे वो glass है or a cup that we are having our coffee in, there also उसके atomic level पे उसमें movement चल रही है और उसमें life है. The electrons are moving around the nucleus orbit जो होता है, ठीक है? So और हर कोई चीज जो होती है जिसको हम डेड थिंग बोलते हैं, ये सब पता है हमको, वो एटम्स उसमें होते हैं. एटम्स बनते ही ऐसे हैं, मतलब जो सबसे सूक्ष्म कण होता है किसी भी चीज का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कुछ भी हो, टेबल है, चेयर है, ठीक है, एवरीथिंग एटॉमिक लेवल पे ऐसे ही बनती है. जो हमने साइंस में बहुत पहले बचपन में पढ़ा था कि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस जिसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो उसके बाहर ऑर्बिट करते रहते हैं, वो लगातार हिलते रहते हैं. हाँ, वो क्लोज कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं इफ इट इज अ चेयर और अ टेबल, बट इट रिस्पॉन्ड्स टू एनर्जी. हर एक चीज एनर्जी का, एक पत्थर भी जो रखा हुआ है घर में, वो एनर्जी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है. तभी तो जो हमारा मैजिक रॉक है उसमें अभी तक इतनी पावर आ गई है दैट यू कैन जस्ट होल्ड इट इन योर फिस्ट एंड यू कैन प्रे फॉर समथिंग टू इट. यू नो, कोई भी चीज चाहिए, जैसे इंटरव्यू जाना है आपको, इंटरव्यू के लिए, सो यू कैन जस्ट टेक योर मैजिक रॉक और उसको हम आंख बंद करके हम प्रे कर सकते हैं वेरी वेरी विविडली that thank you for my amazing interview and I got through it. Was so much fun giving and I was so confident and you know we had such a lovely conversation and I could speak so well. I'm so surprised it went off so well. ठीक है, आपने ये सब बोल दिया पत्थर को लेके, उस पत्थर has got a power now.
जबकि तो वो बिल्कुल ही डेड थिंग है ना, अगर हम उस हिसाब से देखें तो सेंशियंट इनसेंशियंट को हम बोलते हैं डेड एंड अलाइव, ठीक है। सो वो बिल्कुल इनसेंशियंट है। टेबल, कार, ये सब अलाइव तो नहीं होती है, बट इवन देन दे आर लिसनिंग, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी यू आर गिविंग। एनर्जी के लेवल पे हर एक चीज रिस्पॉन्ड कर रही होती है, ठीक है। चाहे आप उसको कितनी भी, आप फ्लोर को थैंक यू बोल रहे हो, वो फ्लोर आपके हिसाब से डेड है, पर वो डेड नहीं है, वो रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज जो एनर्जी आपने दी है, हाँ वर्ड्स ऑफ कोर्स नहीं सुन पाएगी क्योंकि उसके कान नहीं है, ठीक है, बट एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो अपनी जिंदगी से, वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। दिस इज व्हाट साइंस इज, ठीक है। सो क्वांटम फिजिक्स में हम यही पढ़ते हैं दैट इमेजिन तो ह्यूमन बींग्स पे कितनी ज्यादा असर करेगी, है ना, जो ऑलरेडी मतलब दे आर अलाइव, दे हैव अ थिंकिंग ब्रेन, एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट द पावर इज। सो जिस भी चीज को, किसी अपॉर्चुनिटी भी अगर आपकी जिंदगी में आई है, आपने उसको भी अगर थैंक यू बोल दिया है ना, वो रिस्पॉन्ड करेगा। आप ट्रैफिक में हो और ट्रैफिक के लिए बोल रहे हो थैंक यू टू सी सो मेनी, फॉर सीइंग सो मेनी पीपल ऑन द रोड, so many people they are going for work, and economy का turnover कितना होता है, इतने लोग हैं सड़क पे, है ना, तो and abundance है, so many people in the cars and buses and this and that, there's so much of a movement going on. So if you say thank you to the traffic instead of getting irritated, so normally क्या होता है, हम ट्रैफिक को देख के जिंदगी भर आज तक इरिटेट हुए, हमने कभी भी थैंक यू नहीं बोला है, क्योंकि हम हमेशा लेट ही हो रहे होते हैं ना हर जगह जाने के लिए, ठीक है। बफर टाइम लेके तो हम जिंदगी में कोई काम ही नहीं करते हैं, हमेशा टाइम के बाद ही करते हैं, मतलब जब बिल्कुल टाइम हो जाते हैं उसके बाद हम निकलेंगे, वी आर नेवर एट ईज, है ना, मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। सो हम बफर टाइम लेके तो कहीं जाते नहीं है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट जो टाइम हुआ है तभी निकलेंगे ऑफिस के लिए या कहीं पे भी हमको जाना है, और हमेशा लेट ही हो रहे होते हैं। Everybody is getting late. That's why they're honking so badly on the road, and people are getting so frustrated. Immediately energy shift karo. Energy shift karo and say thank you for the traffic, and thank you to all these people that whatever work they are going in for, इनका आज बहुत conclusive और wonderful day है, ठीक है। उसके लिए आपने thank you बोल दिया, energy shift हुई, you will see that actually all those people जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आपके उस प्रेयर के कारण something good will happen in their life on that day. Okay, so isn't it a win-win situation that आप जिस चीज को thank you बोल रहे हो, आपकी भी जिंदगी बदल रही है, and plus उनकी भी जिंदगी बदल रही है, and instead हम क्या करते हैं, ट्रैफिक के लिए कुछ कुछ बोलते हैं। So this applies to everything, that shift your energy, be in the energy of gratitude, ठीक है। अगर आपका किसी से झगड़ा भी हुआ है ना, immediately shift your energy, bless yourself and bless that person. Okay, thank you for a perfect relationship, thank you that this person grows and thrives, thank you for this person's wisdom and happiness. I think किसी ने चिल्लाया है तो उसको wisdom और happiness की बहुत जरूरत है ना, उसको गुस्से की जरूरत नहीं होती है। तो वो एनर्जी शिफ्ट करके, एंड देन वी सी थिंग्स विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट वे, है ना, क्योंकि उनका भी मतलब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, अगर आपने जैसे एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, चाहे हम हैं, चाहे हमारी गाड़ी है, चाहे लोग हमारे अराउंड हैं, चाहे हम जिस भी सिटी में रहते हैं, एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। सो द मोमेंट यू हैव पुट योर एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड इनटू एनीथिंग, everything starts moving. So this is what we are going to do early in the morning every day, जब हमारा subconscious mind is pretty active, ठीक है, still active। जैसे आप सुबह सो के उठते हो तो subconscious mind is very active, तो उस वक्त हम 10 blessings को count करेंगे, and we'll have to rack our brains to figure out new blessings every day. This is what Rhonda Byrne has written here. मतलब रोज कोशिश करेंगे कि 10 न्यू ब्लेसिंग्स के लिए हम अपना ब्रेन रैक करें, मतलब सोचें, फाइंड करें, ऐसे नहीं कि मुझे बता दो, ठीक है, मैं और किसके लिए हो सकती हूँ। रौनक बहन ने वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें, उन्होंने बताया आप हेल्थ के लिए कर सकते हो, आप बॉडी के लिए कर सकते हो, आप 5 सेंसेस के लिए कर सकते हो, आप ब्रेन के लिए कर सकते हो, आप प्लैनेट्स के लिए कर सकते हो, आप 9 प्लैनेट्स के लिए, आप स्टार्स, सन, मून के लिए कर सकते हो, आप रेन के लिए कर सकते हो, आप क्लाउड्स के लिए कर सकते हो। So you can do it for anything. You can do it for airplanes if you want to have more travels by air. You can do it for all the flights that you have taken, past, present, future, जो आपको करना है। थैंक यू बोलने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और इतनी सारी चीजें हैं, मतलब रोड्स के लिए, फ्लावर्स के लिए थैंक यू, किसी भी चीज के लिए। ट्राई एंड फिगर आउट 10 न्यू एवरी डे, ट्राई नॉट रिपीटिंग, ठीक है। सो पहले ऐसे होता था कि मैं अपने मॉम और डैड के लिए तो रिपीट करती थी, रोज सेम होते थे, तो अब मैंने उनके लिए 5-5 अलग ही लिखने शुरू कर दिए। तो मैंने आपको भी बताया था कि जस्ट राइट 5 फॉर योर मॉम एंड 5 फॉर योर डैड, बिकॉज दैट्स अ सोर्स रिलेशनशिप। आई डोंट थिंक उनका मंडेन तरीके से मतलब ऐसे बाकी चीजों के साथ नहीं लिख के
we'll write 5 for father, 5 for mother, and that all of us have to do. उसकी वजह से ही आप देखना लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी, बिकॉज जिस सोर्स से आप इस दुनिया में आए हो, अगर आप उनके लिए थैंक यू लिख रहे हो तो अपने आप, और उनके लिए जो आप लिख रहे हो उसमें हो सकता है कुछ रिपीटेड चीजें हो, डजंट मैटर, बट रोज एवरी डे अदर देन काउंट माई ब्लेसिंग्स, अगर आप ये प्रैक्टिसेस ऑलरेडी 1 महीना कर चुके हो, जैसे आपने जनवरी के पहले अगर ज्वाइन किया है, तो आपको काउंट माई ब्लेसिंग्स के अलावा 5 फॉर मॉम एंड 5 फॉर डैड लिखना पड़ेगा, and you see the difference that's going to make to your life, or whether they're alive or they're not alive. I mean, that's immaterial. We have to continue writing for them. Okay, so that itself will start shifting things in your life very fast, because आधी चीजें तो उनसे ही आती हैं, like कुछ past programmings हो चुकी हैं, and उनकी वजह से अगर स्पेशली अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको याद करके आपको अच्छी फीलिंग्स आने लग जाएंगी, एनर्जी वहां जैसी शिफ्ट होगी, आपकी बाकी के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे. That's how it also works. Okay, so this is what we are going to do about count my blessings. And so इसमें लिखा हुआ है, when you're grateful for the things you have, no matter how small they may be. Okay, it could be just a smile that your neighbor has given to you, or maybe आप एकदम से गए और लिफ्ट वाज ऑलमोस्ट ऑन योर फ्लोर, अगर आप लिफ्ट यूज करते हो घर में या ऑफिस में, सो द लिफ्ट वाज ऑलमोस्ट ऑन योर फ्लोर, आपको वेट नहीं करना पड़ा, और someone allowed you inside the lift, बहुत भरा हुआ था, still people said that please get in, that way. So इतनी चीजों को नोटिस करके, acknowledge करके, thank you बोलना will like determine the depth of gratitude that we are going to cultivate. और ये डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट करने की जरूरत है. ये जो छोटी चीज है, जैसे यू जस्ट गो एंड द ट्रैफिक सिग्नल टर्न्स ग्रीन, सो ऑलवेज से थैंक यू फॉर दैट. ये हमने पावर बुक में पढ़ा था कि जैसे से आप जा रहे हो, इजी ट्रैफिक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स. फिर उसके बाद आप गए, ग्रीन लाइट हो गई एंड यू कुड गेट थ्रू द ट्रैफिक सिग्नल, उसके लिए थैंक यू. So the sun is shining so bright, उसके लिए thank you. So when your day gets spent like that, तो अभी आप लिख नहीं रहे हो, बट आप बोलते भी जा रहे हो, acknowledge भी करते जा रहे हो. So this increases the depth of gratitude, and according to the quantum physics, आपका outward realities change होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि inwardly आप change होते जा रहे हो. You're planting that seed of gratitude in your life. So keep planting those seeds. जैसे आपने किसी चीज को notice किया, thank you. कुछ ऐसे like you found a beautiful store that has just opened up near your house, say thank you. If you're passing through your house and you see a vegetable market जो बहुत नजदीक है आपके घर के, उसके लिए thank you. So I don't know how many times have we really said thank you to the market around the house, जहाँ से हम कुछ भी groceries कभी भी खरीद के ला सकते हैं, कभी milk pick up कर सकते हैं बहुत आराम से. There are florists sitting here and there, so it's so easy to just get out of the house and buy some beautiful flowers अगर आपको कहीं जाना हो. Then like multiple, there are stationaries around us that makes it so easy, because sometimes you want something from the stationery, right? It is so easy. So इस तरह try and dig in more things that you can be grateful for. और जितना ज्यादा हम अपना दिमाग लगाएंगे ढूंढने में, ठीक है, gratitude, उतनी ही ज्यादा हमारी life fundamentally change होगी. And then उसके बाद इसमें लिखा हुआ है that normally हम ऐसे थे, we count negative things when we talk about the things we don't have. Mostly human mind structured ही ऐसा होता है, gravitates more towards the thing that you don't have. So you might not have 2 but you have 8. तो उन 8 को भूल के हम इन 2 पे पूरा फोकस रखेंगे कि ये 2 नहीं है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हमने उन 8 थिंग्स के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दिया ना, अपने आप ये 2 आ जाती हैं. That is how it works. So yeah, it says that with every negative thing we count, we cancel out the blessings that were on the way. वही है कि आपने खूब बकेट में पानी भरा और नीचे से फिर कंप्लेन करके होल कर दिया. फिर आपने खूब सारा बकेट में पानी भरा, पानी मतलब ब्लेसिंग्स भरी, खूब सारा ग्रैटिट्यूड लिखा, फिर नीचे से होल कर दिया कंप्लेन कर करके, फिर और भरते गए. तो इस तरह से वो बकेट कभी भर ही नहीं पाती है ना, और इतनी भरी नहीं पाएगी कि आप खुद भी उसका पानी यूज करो और लोगों को भी दो. सो बिकॉज उसमें लगातार देयर इज अ होल डाउन देयर दैट वी हैव मेड, सो वी नीड टू प्लग इन दैट होल नाउ. एटलीस्ट वी कैन ट्राई. ओके, एंड द मोमेंट हमको एक आगे चैप्टर में सिखाया गया है कि अगर गलती से हम कंप्लेन कर भी देते हैं ना, तो इमिजिएटली लाइफ लाइन यूज करो. सो लाइफ लाइन यूज करना, बट आई मस्ट से दैट दिस इज, सपोज अगर मैंने बोला that so and so always comes late to office, जो भी कोई है, अगर मेरी कोई कोवर्कर है और मेरे मुंह से निकल गया
किसी ने पूछा कि वेरी शी मुझे बहुत काम है, तो मैं बोलूंगी अरे वो हमेशा ऑफिस लेट आती है, बट आई मस्ट से दैट उसका ये वाला काम बहुत अच्छा है, दिस पर्टिकुलर वर्क शी डज वेरी डिलिजेंटली एंड आई लव दिस क्वालिटी अबाउट हर. सो इमिजिएटली मैंने कंप्लेन की, लेकिन मैंने उसको कवर अप पिक्चर कर दिया. इजंट इट लाइक आई हैव प्लग्ड दैट होल, आई हैव नॉट लेट इट गेट क्रिएटेड. सो दिस इज वॉट लाइफ लाइन यूज कर लो, बिकॉज गलतियां तो होंगी, कंप्लेन्स अपने आप निकलती हैं. बाहर जाते हो बोलोगे ओ गॉड कितनी धूप है, आज धूप बहुत जोर से लग रही थी, इमिजिएटली बट आई लव द सन, आई लव द मॉर्निंग सनशाइन, आई लव वॉचिंग द सनराइज एंड सनसेट. सो यू हैव कवर्ड दैट अप. आपने गलती से बोला सन के बारे में कुछ गलत कि बहुत तेज गर्मी लग रही है, ठीक है, बट इमिजिएटली आप उसको लाइफ लाइन यूज कर लो. उस कंप्लेन को ड्वेल मत करो उसमें, मतलब डोंट लेट इट परसिस्ट, दैट्स व्हाट इट मीन्स. So that's about it in this chapter. And we have to do this first thing in the morning or as early as you can. Suppose आपको उठते ही वॉशरूम जाने की आदत है, आपको उठते ही चाय पीने की आदत है, तो कोई बात नहीं, आप चाय बना लो, keep your chai ka mug, and then you can write your blessings. So that way also you can do. Okay. And how to write it, इसमें language लिखी हुई है, I'm so happy and grateful, or I'm truly grateful, और with all my heart I'm grateful, इस तरह की लैंग्वेज के साथ में. and because लिखना जरूरी है, because उससे feelings accentuate होती हैं. Like I'm so happy and grateful to my beautiful house where I live with all the comforts and luxuries and with safety. So you've written because also, that grateful to the house, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, but why you grateful to the house? Because I live here with safety, with all comforts and luxuries. I'm so grateful to my work because it gives me opportunities, growth, name, fame, money, etc. and my identity. I feel everybody's work is their identity also. Okay, so that is what. Then number 3, you write again. So I'm so grateful to my children because they have given me the joy of being a mother, right? And they are extremely caring and responsible towards me. So you've written that because. Then you can write, thank you so much to all the fruits and vegetables that I have eaten till date because they have really helped me grow, heal and nourish. So इस तरह से हर बार आपने because लिखा है, तो because लिखने की वजह से feeling थोड़ी और deeper हो जाती है. And once you've written all 10 of them, then reread them. Okay, go back to point number 1, read that and say thank you, thank you, thank you 3 times in your mind or out loud. But do read that again. This will cement those blessings into your life. So इसीलिए इसको रीरीड करना जरूरी होता है. अगर कर सको तो keep your right hand on your heart and say thank you, thank you, thank you. This also you can do because we've read about it, that keeping the right hand on the heart increases the feeling, और दिल से महसूस होता है. So and it's all about feelings, right? Gratitude. So this is what we need to do. And ये है इनका format of writing. I'm truly blessed to have what because लिखना जरूरी है. I'm so happy and grateful. I'm truly grateful, or with all my heart, thank you for this. So you can also write thank you Krishna, thank you Vaheguru, thank you universe, thank you God. ये भी options हैं, ठीक है. नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपकी उनसे feelings ज्यादा हो रही हैं thank you लिख के, तो फिर आप कि मतलब कोई सिंबल भी चूज कर सकते हो. थैंक यू सन, थैंक यू वाहेगुरु, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, whatever you want to write, or you can use any of these formats. So whatever it is, and that's about it. This is the chapter for today. एंड सो इसमें ये सब मैजिक, ये सब ग्रैटिट्यूड के टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं रोंडा बर्न ने. अगर हमको रेफरेंस चाहिए, वैसे इट विल बी शेमफुल टू एक्चुअली लाइक गेट आइडियाज कि हम किस चीज के लिए, मतलब हमको पता होना चाहिए इतने टाइम में. सम ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर क्वाइट सम टाइम, दैट वी शुड नॉट नीड टू बी टोल्ड कि आप देखो आप इस चीज के लिए भी, बल्कि वी शुड बिकम दैट सोर्स ऑफ हेल्पिंग समवन रादर देन कॉन्स्टेंटली सीकिंग हेल्प फ्रॉम द अदर्स, है ना. सो हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस के लिए थैंक यू, मनी, रिलेशनशिप्स, पैशंस, हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर, material goods and services, and any subject of your choosing. So just figure out more and more things जिसके लिए, and then see your life, your blessings are going to multiply.
अच्छा, कल मैजिक रॉक पीपल जो शायद पहली बार या फर्स्ट टाइम ही मैजिक बुक कर रहे हैं, पीपल ऑन द यूट्यूब हु हैव जस्ट सब्सक्राइब टू अस, बिकॉज हमारे एक दिन में 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं. सो देयर माइट बी मेनी पीपल जो बहुत इनिशियल स्टेज में है हमारे साथ में. सो इन केस अगर आप यू हैव जस्ट बिगन द जर्नी विद अस, सो एक छोटा सा पत्थर आपको कल के लिए ढूंढना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैजिक रिमाइंडर. छोटा सा पत्थर विच फिट्स इनटू योर फिस्ट, जो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए. ठीक है, इट शुड नॉट हैव शार्प एजेस, सो इट शुड बी राउंडिश, कंफर्टेबल टू होल्ड. ठीक है, एंड इट कैन बी एनी रैंडम जो सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर होते हैं और वट एवर, लाइक वेरी बेसिक. दैट इज वॉट यू नीड टू चूज, बिकॉज कल वाला प्रैक्टिस इज मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो हम करेंगे. So for that it says here magic reminder. So anyone who's doing this journey for the first time with us. Okay, so this is first thing in the morning. Make a list of 10 blessings in your life you're grateful for and write why. ये हम कर चुके हैं. Go back to your list and read it again and then say thank you, thank you, thank you 3 times after each one of them. ठीक है, और ये हमको लगातार लाइफ लॉन्ग करना है 27 years and more तक. एंड कल की प्रैक्टिस हमको आज पढ़ने को बोली है, बट वही मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, हम कल ही पढ़ेंगे. जस्ट दैट वील फिगर आउट दैट व्हाट स्टोन कैन वी हैव, वो हम अपने पास रखेंगे, आज ढूंढ के रखेंगे. अगर इन केस यू ऑलरेडी if in case you already have, no worries, you have to continue using that only. But if you have lost it, forgotten about this practice, then you have to find a new stone. So that's it. Now we go to the other book, which is Telepsychic. Neeti will be reading for us. Yeah, ma'am. Yeah. So we are continuing from that. Yesterday हमने उस person के बारे में पढ़ा था जो एक बुकी थे और वो horses पे पैसा लगाते थे. किस तरह वो उन पहले से ही subconscious से पूछ लेते थे that which horse is going to win, you know, please reveal to me answer. And he would get the answer in his dreams, and then he would put his money on those horses and he'd win every time. So उन्हीं का I think थोड़ा सा paragraph है जो हम continue करेंगे. Yeah, please start reading. Thank you, ma'am. How to remember a special dream. I explained to this bookie how to recapture the memory of his special dream about a winner, which had eluded him. I suggested that whenever he awakens in the morning, the very first thing he should say to himself is, I remember. Then the dream will come back in full form. He has tried it and it works. Yeah, so this is about, if you remember, इनका जो experience हमने कल पढ़ा था, that he would actually ask questions, you know, from the subconscious mind कि कौन सा वाला horse win करेगा, मैं कौन से पे पैसा लगाऊं, ऐसे पूछते थे. तो उनको बहुत बार आंसर्स नहीं आते थे, और इसमें लिखा हुआ था उस पैराग्राफ में that he would ask, और कभी कभी वो जवाब मतलब उनको दिखता भी था बट उनको वो सपना याद नहीं रहता था सुबह. तो बहुत अपना दिमाग वो करने की कोशिश करते थे कि मैंने क्या देखा था. उनको ये पता था कि मैं I had actually dreamt of that, but he didn't remember that, you know, what was that dream. So then again he went to Dr. Joseph Murphy and he said that मुझे याद ही नहीं रहते अपने सपने. मुझे ये याद है मैंने सपना देखा था, बट कौन सा वाला विनर था ये मुझे याद नहीं है. Then Dr. Murphy told him that जैसे आप सुबह सुबह सो के उठते हो, the very first thing in the morning when your subconscious is still active, ठीक है, उस वक्त आप अपने आप को बोलो I remember, you know, just I remember. It's not very complicated. I remember this, that, nothing. I remember. Then the dream will come back in the full form. Then he started doing this and it worked. That's what it says. Yeah. Telepsychics in the life of Luther Burbank. The name of Luther Burbank is familiar to all, and according to his own statement, it was a common practice for him to send a telepathic message to his sister whenever he wanted her to accompany him to visit their ailing mother. On these occasions, he never had to resort to the telephone or telegraph service. I think हमारे साथ भी तो ऐसा होता है. कभी कभी हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं and that person suddenly appears or calls up or sends you a text message. है ना, हम अगर बहुत दिनों से किसी से नहीं मिले होते हैं तो suddenly that person's name, you know, pops up in our mind. Oh, that, and then suddenly that person kind of either calls or texts or whatever.
So this is what is the telepathy. So इनके बारे में लूथर बर्बैंक बेसिकली बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. जब हम साइंस के वर्ल्ड में वेंचर कर जब हम शुरू करते हैं, अगर आपने कभी मतलब if you've taken PCB as your subject, physics, chemistry, biology in the university, so इनके he was a very popular botanist और इनको खूब अवार्ड्स में मिले. अपने बॉटनी में इन्होंने इतने नए नए स्ट्रेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड उस जमाने में निकाले थे. सो ये बहुत पॉपुलर बॉटनिस्ट है, साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के फील्ड में इनका बहुत ज्यादा नाम है. मतलब जिस तरह के इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, दे आर पार एक्सीलेंस. सो उनके बारे में लिखा हुआ है लूथर बर्बैंक. बट उन्होंने कैसे ये टेलीसाइकिक कम्युनिकेशन यूज किया, जब उनको अपनी मदर को मिलने जाना होता था तो उनकी सिस्टर को साथ लेके जाना चाहते थे. बट जो भी सिचुएशन होगी, मे बी सिस्टर नहीं जा पा रही होंगी या नहीं जाना चाहती थी, जो भी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, वॉट एवर, ऑल दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर. बट इट सेज दैट जब भी वो उनको अपनी एलिंग मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको जब अपनी मम्मी से मिलने जाना होता था और वो चाहते थे कि मेरी बहन भी मेरे साथ में जाए, तो अब जो भी सिचुएशन थी, बहन को साथ ले जाने के लिए वो टेलीसाइकिक को यूज करते थे. ठीक है, he would actually send a telepathic message to his sister and she would accompany him because वो चाहते थे कि वो साथ में आए. So तभी वो इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि जब भी वो उनको अपनी मम्मी के घर में अपनी बहन को साथ लेके जाना होता था, उनको कभी भी फोन कॉल और टेलीग्राफ नहीं करना पड़ता था. बिकॉज उस वक्त मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यही होते थे, है ना. फोन तो होता नहीं था, ये सब 1950s और 40s के जमाने की बातें हैं. उस वक्त फोन होते नहीं थे, तो लोग इसी तरह से कम्युनिकेट करते थे. या तो वो लैंडलाइन फोन टाइप होते थे, वो भी कुछ लोगों के पास ही, और टेलीग्राफ मैसेज भेजते थे. तो वो कहते थे कि मुझे कभी अपनी सिस्टर को फोन नहीं करना पड़ता था, कभी टेलीग्राफ नहीं भेजना होता था, वो साथ आ जाती थी. ठीक है, तो वो टेली कम्युनिकेशन यही वाला यूज करते थे, टेलीसाइकिक कम्युनिकेशन को यूज करके. एंड ही वाज फेमस फॉर यूजिंग द टेलीसाइकिक कम्युनिकेशन. कितने अच्छा हो जाएगा ना, हमारी फोन कॉल्स कितनी कम हो जाएंगी अगर ऐसा हो गया तो. हाँ जी. Dr. Phineas Parkhurst Quimby could appear at a distance. Dr. Quimby, undoubtedly the foremost spiritual healer in America, has been known to have stated, I know that I can condense my identity and appear also at a distance. His astral or fourth dimensional body was as real to Quimby as was his physical body. These appearances of Quimby to patients 100 or more miles away from his home took place beginning about 1845 or 1846. Quimby demonstrated that man is a transcendental being and is not bound by time, space, and matter. To cite one instance in the extraordinary life of his unique spiritual healer, he wrote to a woman who lived a great distance from his home in Belfast, Maine, stating that he would visit her on a certain day, although he never revealed the exact time. Due to an oversight, the letter was never mailed. However, while the woman for whom he promised to pray and visit was entertaining another woman at dinner, the guest said, There is a man standing behind your chair, and she described him in detail. The lady of the house declared, Oh, that is Dr. Quimby. He is treating me. Dr. Quimby was mentally and spiritually present with her, wearing a fourth dimensional or subtle body, which was seen by the guest in the home. Physically, Quimby was in his home in Belfast at that time, concentrating on his patient and contemplating the divine ideal, the healing, purifying force of the infinite healing presence flowing through his patient. And he decided at the same time to project himself into her presence, undoubtedly with the idea of instilling greater faith and receptivity in his patient.
ये डॉक्टर क्विम्बी के बारे में, इनका रेफरेंस हमने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस बुक में भी पढ़ा था। डॉक्टर क्विम्बी बहुत पहले स्पिरिचुअल डॉक्टर, स्पिरिचुअल हीलर थे। मतलब अगेन सेंडिंग ब्लेसिंग्स थ्रू द माइंड, जैसे कोई और कहीं और रहता है, बीमार है, अगर मैं लंदन में रहती हूँ कोई अमेरिका में रहता है, डॉक्टर क्विम्बी लंदन में बैठे बैठे अमेरिका के पेशेंट को हील कर देते थे। उनकी माइंड की इतनी पावरफुल पावर थी, बिकॉज वो स्पिरिचुअल, और ये पावर हम सब में है। इसी को हम टेलीसाइकिक बोलते हैं। तो किसी को भी जो विजुअलाइजेशन इज व्हाट एल्स, आई मीन विजुअलाइजेशन इज जो 10 साल के बाद चीज होने वाली है, वो भी तो हम अभी विजुअलाइज कर सकते हैं ना अपने दिमाग में। एंड वी विल मेक इट हैपन इन 2 months इंस्टेड ऑफ 10 years। इतनी पावर होती है ह्यूमन माइंड में। डॉक्टर क्विम्बी के बारे में बताया था, देयर वाज अ लेडी, ही वाज हीलिंग। तो वो डॉक्टर क्विम्बी बेलफास्ट में थे, वो लेडी कहीं और रहती थी, ठीक है। तो वो उनको हील कर रहे थे। तो जो पेशेंट थी उनकी, ये फीमेल, वो डिनर कर रही थी किसी फ्रेंड के साथ में, दोनों उनके घर में डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। एंड सडनली जो गेस्ट लेडी थी, वो कहती है कि दरवाजे पे कोई आया हुआ है, और देखा तो एक फिगर बना हुआ था। तो वो लेडी कहती है, अरे नहीं, वो डॉक्टर क्विम्बी है, वो एक्चुअली मुझे हील करे। मतलब इतनी पावरफुल प्रेजेंस थी कि उनका फिगर नजर आ गया, like उनको। डॉक्टर क्विम्बी इतने पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर थे, लाइक ही कुड बी, लाइक उनका फिजिकल फॉर्म नजर आने लगा, जबकि वो अपने घर से हील कर रहे थे इस फीमेल को। दैट इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। आई मीन हमको इसे सीखने को जो ये है, दैट पहले तो आप किसी को भी ब्लेस कर सकते हो, like we all have that spiritual power within us. It is not just Dr. Quimby who has that power, जो हम अपनी magic wand practice में भी use करते हैं, जो of course day number 24 पे आती है magic book में। उसमें भी हम यही करते हैं ना, that हम imagine करते हैं कि जो भी वो person है जिसको हमको healing देनी है, या हमको wealth और prosperity के लिए pray करना है, या हमको उसकी happiness या health के लिए करना है, उसको हम अपने घर में बैठे बैठे अपने फोकस और कंसंट्रेशन से उस पर्सन को ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं हीलिंग की, ठीक है। और उसकी लाइफ की वो टर्न अराउंड स्टोरी बनने लग जाएगा। दिस पावर वी ऑल हैव इट, जस्ट दैट हमें अपने दिमाग को थोड़ा शांत करके फिर बैठना होता है, क्योंकि माइंड में इतनी ज्यादा नॉइस होती है। और जो बहुत प्योर सोल्स होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलते, चीट नहीं करते, वो ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। प्योर सोल का मतलब यही होता है कि वो गंदगियां नहीं लगी हुई है बहुत ज्यादा। तो अगर इस तरह से, और अपनी लाइफ के लिए भी हम कर सकते हैं, अपना ही विजुअलाइजेशन से तो जर्नी शुरू होती है, जो हम मैजिक बुक में भी चैप्टर नंबर 13, उसमें पहले अपने लिए करते हैं ना। 13 चैप्टर में अपनी ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हार्ट मैजिक करते हैं, फिर से 20th चैप्टर में, वो भी हम अपने लिए करते हैं, अपनी ड्रीम लिस्ट के लिए। फिर हम चैप्टर 22 करते हैं, बिफोर योर वेरी आइज, वो भी हम अपनी ड्रीम लिस्ट के लिए करते हैं। तो हमने अपने लिए अपनी पावर, अपनी चीजों को जब रियलाइज कर लिया है, फिर हम अपनी उस पावर को यूज करके लोगों की जिंदगी बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमको ये यकीन हो जाता है कि हमारे अंदर ये पावर है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, तो अब हम किसी और की लाइफ में कैसे डिफरेंस लेके आए, ठीक है। ये डॉक्टर क्विम्बी वाली पावर हम में भी है, और ये इतना ज्यादा एविडेंट फॉर्म में आ सकती है कि आपको ह्यूमन फिगर मतलब नजर ही आने लग जाए, ठीक है, इस तरह से। थ्रू द टेलीसाइकिक हम किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, हम किसी को हील कर सकते हैं, हम किसी की लाइफ में जाके डिफरेंस, वी कैन मेक दैट डिफरेंस टू दैट पर्सन्स लाइफ। इतनी पावर होती है। अगर आपको सपोज किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप चुपचाप अपनी आंखें बंद करो, बिकॉज हम एंजाइटी में चले जाते हैं ना, कि उसने ऐसे समझा, मेरे बारे में ऐसे कर दिया, ये है वो है, गलत समझा, मेरा इंटेंशन तो ये था भी नहीं, मैंने तो ऐसे किया था। तो हम गिल्ट में ही रहते हैं, और गिल्ट बहुत बिलो द लाइन फीलिंग होती है। उसकी वजह से आपकी बाकी की चीजें भी, आउटसाइड एटमॉस्फेयर सारा वैसा हो जाएगा। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग एवरीथिंग जो आपको और गिल्टी फील कराएंगे, या जो आपकी लाइकिंग के नहीं होंगे। तो इंस्टेड वी कैन यूज दैट टेलीसाइकिक मेथड, that you can just sit, deep breathe for a while, make the imagine in the imagination that person, उसको आप अपने सामने बैठाओ,
ठीक है, और उसका हाथ पकड़ के आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ, that this is what it was, I meant this and everything is this, and imagine that you're hugging that person, shaking hands and everything's okay. एंड ये वाला जो मैसेज आपने टेलीसाइकिक फॉर्म में करा है, दिस इवेंचुअली ये पहुंच जाएगा उस पर्सन तक, ठीक है, और आप देखोगे दैट सिचुएशन विल रिजॉल्व एंड डिसॉल्व और व्हाटएवर, एंड देयर विल बी अ परफेक्ट रेजोल्यूशन, एंड either that person will call or you'll bump into that person in a party and have a very good communication, या कुछ ना कुछ from the fourth dimension it will start having a perfect way out. So that's how we can use telepsychic or telepathy. Okay. Okay. Now we go to the next one, next topic. Yeah. Telepsychics enabled a young man to win a scholarship and a new car. Robert Wright, 19 years of age, assists me every Saturday morning in putting together my radio program in a soundproof room in my home. He has been practicing the law of his mind, and every night before retiring by quietly exclaiming the following: Infinite intelligence in my subconscious mind guides me in all my studies in college and reveals me to me all the answers. I am always poised, serene, and calm. This is why I pass all my examinations in divine order. I know a car is an idea in the universal mind. I claim a new car now, which comes to me in divine order. I give thanks for the answered prayer. I know that the nature of my deeper mind is to respond to my requests, and I also know that my idea, when repeated faithfully, will be etched in my subconscious and come to pass. The sequel was interesting. He experienced a pre-vision one night about a week prior to a special examination and saw all the questions to be asked in a dream. He subsequently got excellent marks and won a scholarship for a considerable sum of money, which will aid him in his education. The car he was driving to college broke down on the freeway, and the same day he was presented with a gift of a new station wagon. When the car broke down, he affirmed boldly, "Only good can come out of this," and only good came to him. The key to a full and happy life is to rejoice in the goodness of God in the land of the living. Yeah, how cool this is. कुछ भी चाहिए तो आपको वो इस तरह subconscious mind can give that to you. So this person, 19-year-old Robert Wright इनका नाम था. ये स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में और इनको अपने एग्जाम्स की चिंता थी कि पढ़ाई कैसे करेंगे और ये सारा कुछ. तो ये रॉबर्ट राइट एज एन एम्प्लॉय डॉक्टर जोसेफ मर्फी के ऑफिस में काम करते थे और सैटरडे मॉर्निंग को जो रेडियो प्रोग्राम्स होते थे उसमें उनकी सेटअप करने में हेल्प करते थे. ठीक है. सो अब उनका जब एग्जाम आया यूनिवर्सिटी का तो रॉबर्ट राइट ने अपने आप को बोला दैट अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने के पहले बोला दैट माय इन्फिनिट डिवाइन सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी ऑल द क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम एंड ऑल द आंसर्स. एंड ये भी कहा दैट यूनिवर्सल माइंड में एक कार है क्योंकि उनको कार की बहुत जरूरत थी या शौक होगा जो भी था. So he wanted that car as well. So उन्होंने कहा यूनिवर्सल माइंड में कार है and I claim it now. Okay. So इस तरह से वो रोज रात में ये सोचते गए और इवेंचुअली जब उनका मेन एग्जामिनेशन था तो उनको एक्चुअली हर चीज सारे क्वेश्चंस उनको ड्रीम में ही रिवील हो गए कि उसके बारे में पढ़ लो उसके बारे में पढ़ लो. He studied them and he passed the exams with excellent marks. एंड वेल दैट वाज इट. और फिर उसके बाद जब वो जा रहे थे तो उनकी कार ब्रोक डाउन और उसी दिन उनको दूसरी कार न्यू गिफ्ट में मिली. अब कैसे गिफ्ट में मिली क्या मिली पता नहीं, इसमें डिटेल्स नहीं बताए हुए हैं, बट या ही डिड गेट हिज न्यू स्टेशन वैगन एज अ गिफ्ट. ओके, ऑन द सेम डे. सो जब
उन्होंने क्या किया था कि जब उनकी कार ब्रोक डाउन हुई थी, तो हमारी एनर्जी यही आती है ना कि ये देखो सड़क के बीच में फंस गए, अब कर गए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव एनर्जी जाती है, मैं किसको बुलाऊं, क्या करूं, मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने बार बार सेल्फ अफर्मेशन ये की दैट ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस। मतलब जब उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो आगे नहीं जा पा रहे थे, गाड़ी बंद होके सड़क पे रुक गई, सो ही सेड टू हिमसेल्फ दैट ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस। तो इनकी एनर्जी लेवल कितना हाई था, बिकॉज किसी भी कार अगर बीच सड़क में खराब होती है या स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो कभी भी पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं आ सकती है। इन्होंने इंस्टेड ये एनर्जी रखी, क्योंकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तो इनको ये पता था कि मुझे किसी भी चीज को एनर्जी नेगेटिव नहीं देनी है, क्योंकि उसके कारण नेक्स्ट मोमेंट क्रिएट हो जाता है एंड विच विल बी इवन वर्स देन राइट नाउ। सो इसलिए जैसे उनकी गाड़ी खराब हुई, उन्होंने यही कहा ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस, एंड ओनली गुड केम टू हिम। सो यही लिखा हुआ है, द की टू अ फुल एंड हैप्पी लाइफ इज टू रिजॉइस इन द गुडनेस ऑफ गॉड इन द लैंड ऑफ लिविंग। तो जो हो रहा है हमारे साथ, अ थैंकफुल हार्ट इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये हमने मैजिक बुक में पढ़ा था। तो चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, अगर हम अपने आप को ये बोलते रहेंगे दैट ओनली गुड कैन कम आउट ऑफ दिस, जरूर इसके पीछे बहुत अच्छी चीज है, something for my great growth, something for my well-being, and something for my happiness. There's a treasure behind every situation, every problem. So जो भी problem नजर आ रही है उसके पीछे treasure है, ठीक है? So as they say, no, there's always sun shining behind the clouds. So clouds दिख रहे हैं but उसके पीछे सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है। सो वो क्लाउड्स बस हटने की देर है, तो उन क्लाउड्स को थैंक यू बोल के आप हटा सकते हो अपनी जिंदगी में। जो भी आपके डार्क क्लाउड्स आ रहे हैं, जो भी मोमेंटरी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, उनको आप थैंक यू बोल के हटा सकते हो, अपने आप हट जाएंगे, आपको हटाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से that sun will start shining in your life again, and that's how it is, provided आप उसको positive energy दो, ठीक है? That's what it is. So just see the time. It's 7 o'clock, Anita. So just we'll read this tomorrow, rest of it. Thank you so much. Thank you for reading. Points to remember. So by this we'll come to the end of this chapter, and then we'll start the new chapter tomorrow itself. क्योंकि कल का तो magic book वाला chapter बहुत छोटा है. Ma'am, it's my wedding anniversary today. Oh, that's why you had to read, huh? Oh, wish you a very, very happy wedding anniversary. Enjoy. It's a great Saturday weekend, and have a beautiful, beautiful life. Like many years of togetherness. Thank you, ma'am. Happy, Thank you, healthy ma'am. togetherness. Happy and Thank healthy you. togetherness. Thanks a lot. Yeah. This is also Anyone by wants to chance, share ma'am. for that? Neeti ने भरा ही हाँ, नहीं था. Neeti, ma'am, it's also by chance, Neeti hadn't filled the form. उसने कहा था कि तुम ना मेरी तरफ से भर देना. I don't know why that slot came and I put her name there and it went like that. I didn't know that it's Neeti's anniversary today. So Thank you. just think that everything is Mhm. orchestrated so beautifully now. Each and every block has been kept by the universe so beautifully for us. So yeah, वो तो happy. शुक्र है Thank कि you. Really निशांत ने नीति thanks. से नहीं छीना नीतू से छीना स्लॉट। नीति से छीन लिया होता तो वो एनिवर्सरी रीडिंग ही नहीं कर पाती। नहीं नहीं, निशांत को बहुत ही विलफुली प्यार से दिया है, गिफ्ट गिफ्ट मिला है. नीतू नीतू ने, इज अ गिवर नाउ. टुडेज हाँ, गिवर इज नीतू नीतू. इज अ गिवर, शी इज बिकम अ सिग्निफाइड गिवर, स्टैम्प्ड। Ma'am, today is my son's birthday also. Please Wow, bless wow. him. Lots of celebrations. Bless your son with the best of health, happiness, and a beautiful married life. Thank you, thank you, thank you so उनकी much. शादी भी तो होने वाली है। Yes. Yeah. Okay, so anyone wants to share or add anything? Otherwise, we close for today. Good morning, ma'am. Ma'am Sai Prasad here. Yeah, hi, good Hello. morning. Good morning. I would like to You'll share have to my speak a little louder. I mean, just Okay. come closer to your device. Yeah, Or maybe I'll, now I have increased the volume. Is it okay now? it's still low, but yeah, please go on. Okay. This is sharing with respect to my granddaughter.
She was looking for a change in school because the current school didn't come up the standards which her parents thought it would have to be. So they have been trying, and she went and wrote the exam, entrance exam there. But even before that, I had told her that this is what things which she should do in terms of magic steps, in terms of visualizing how she would be in the new school and things like that. Also about all the other steps. I had also told her mom, that who is my daughter-in-law, that she should do Ho'oponopono specifically for her, for school, for this her daughter, and also visualize that she is able to and visualize that she is there in the new school. So it all happened, and she has got the admission. There's only one vacancy in that school, and she has been selected. So it's very Wow. happy. I've also had been doing the Ho'oponopono for her, as well as visualizing and magic dust and wand and everything else, and it has happened. So this is Excellent. Amazing. the So you've become that beacon of that source of hope and happiness for your whole family. there's another major thing with respect to the health conditions for my wife, and that I wanted to do the 333 for it, what you process which you mentioned. I had only one question. All the 333 times, do I need to write it in the same day, or it is Yeah, split? 333 is on the same day, but just make them one-liners. It doesn't Yes, have to be I'll very big. no, just about her health. She's going through many Yeah, so challenges. just say So thank you for your wives with a name. So thank yes, you for a heart, thank you for a perfect lungs, thank you for her perfect kidneys, thank you for the beautiful immune system, thank you for her hair, thank you for her beautiful eyes, thank you for her sense of smell, thank you ma'am. for every cell of her body. So you can keep writing. Some can be repetitive. Once you think you've exhausted everything, then you can, repeat Ma'am, few again ma'am, that way. I'm still wanting to know that for each, you have mentioned so many of them, but each I need to write 333 times, or I write once No, for her health no. and Total, you have to write 333 oh, times. okay. Each could be Yeah. different. Each would be different. Yeah. Okay, fine. Total, Got it it. is Got it. 333. Otherwise, it will So just which I become endless. okay, then I repeat, then I keep repeating it itself. Yeah, you can. Suppose I you've can. written 120 and you feel that you've dug up so many new, like things Yeah. that you can appreciate. So then you can repeat few. Yes, You I can will do that. only write thank you for her perfect health, thank you for her Yes. strong body, thank you for a miraculous healing, thank you for recovery. So that way, and emphasize more on the areas where she's, experiencing the challenge, Yeah. and Yeah. also do Ho'oponopono for her health. Just 10 That minutes, I think, would do. Ho'oponopono, ma'am, every day night I do it for her health. That I'm doing continuously. Acha, Now, how many minutes? Like 108 or something you do? 108. I count Okay. 108 Okay. So that takes around every day. 15 minutes or something. Yeah, it comes to about 12, 10 to, around Like 10 minutes. this. Little ठीक है, faster, I do perfect. around 10, less Yeah. than 10 minutes. I'm able to do it. So Okay. every day night that I do. Now, I had Perfect. another question on the Ho'oponopono. I'm doing that for her, for her health. Can I do again another Ho'oponopono for something else, or it's only for one I should do per night? I mean, you concentrate on health right now. Yeah. At least 45 days, ever since you've begun, at least for 45 days, you continue for her health. Okay. And then you can start for something else. Okay, something else. I'm not talking about her. Like I say, for something else which I say Say for my work grand. or money like that. Yeah, Yeah. So exactly. these 45 days you continue doing for her health. Health, And then after and then 45 afterwards, days, I'll switch over. yeah, you Okay, can start for something else also. okay. Thank you very much, ma'am. This is some Yeah. clarification I wanted. Thank Thank you. you very Thank you much. so much. One has happened. I now hopefully I'm not. I won't say hopefully. I'm sure that other happens No, you again. have to be sure. You have to Yes, I'm visualize. sure. I like, I'm when sure. you like use that telepsychic communication that we're studying right now, that, imagine that she's perfectly hale and hearty, and then all her medical reports have come out like so good. Ma- And, the doctor's amazed to see the miraculous recovery. And, Yes, ma'am. that way.
That's there in my dream list from the Yeah. first time when I wrote the dream list. Now this will be my Hmm. fourth cycle, so it is there. It is there in my dream cycle Great. about No, everything will be visualizing the. absolutely okay. Thank you so much, and God Thank you bless very you much, and your ma'am. wife. Thank 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 you. you very much, ma'am, for Yeah, thank you. getting me on this Mm. journey. I have to thank Oh, Rajesh Khanna ji because he put me here. So and yeah. thank you for You everyone always and mention everyone in the him. Yeah. family. Everyone in the family. Uh, Thank you. Thank you. Thank you so much. So Navjeet, you asked me why 45 days. So whenever there's anything chronic issues in the life, we do it we do it for a minimum of 45 days. Also because of the number, which is like 4 plus 5, which is 9, which is 3 times 3, the creation. That's why. Yes, Ma'am, Ramdas. can I ask? Yeah. Hello, go. Should I Yeah. Ma'am, speak? I want. Please. Let them. Deepa, you're speaking. Actually, I can see on the Yeah. screen as Ramdas first, and then I see Deepa Okay, Gupta. okay, So this is okay, the okay. reason I'm going in order. Yeah. Okay. Good morning. Good morning, ma'am. I Good just wanted morning. to. I You just can wanted please to call me Deepti, and Sai Prasad ji, please call me Deepti. add. I'm not ma'am to all of you. I have so much to learn from all of you. Yeah. I just wanted to add to this that there is एक भजन है बड़ा अच्छा. When अभी आपने एग्जांपल दिया था ना कि उसकी गाड़ी खराब होगी तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा. तो वैसे ही एक भजन है. दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं. So you enjoy both the things. Yeah. Other way, and the other point of view, you give it to everything to Lord and say whatever you are, it's yours. You have given me the dukh and the sukh. So and I Yeah. love both. Yeah. Just wanted It to add becomes this. like such a tadka in the dal, you know. So if there's no tadka, then dal will become bland. Right, और right. सब हमको ऐसे ही मिलने लग जाएगा तो लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी. कोई बोरिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही मैम. And there'll be no Thank- growth in life also. What Right. will we work on? यही था Yeah. बस मैडम. Thank you. Excellent. Thank you. आप हमेशा ज्ञान Thank के you. सागर होते हैं. So thank you for अरे नहीं that. मैम. For always sharing your Thank words you. of wisdom. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yes, Thank you. Deepa, please share. Ma'am, I just wanted to ask if anyone does for anyone means Ho'oponopono for his health or something else, then we should do it for ourselves also, no? If we need. This thing will get cleansed. So the magic of Ho'oponopono is that suppose if I'm directing my I'm sorry, please forgive me. So basically it means that you need to cleanse. See what Dr. Hewlin, so जब वो you know जो उनके वो prisoners जो थे जो mental hospital जिसमें वो काम करते थे, so जब वो वहां पे काम कर रहे थे तो वो what he said in the book, you know, Zero Limits में भी डॉक्टर जो विटाले ने बताया कि अगर कोई भी चीज जो आपके एक्सपीरियंस में आई है, that means there's some reason behind it. Even if somebody is telling you a sad story about something that happened in their life, it is that you have to clean that energy because of some reason that energy has come to your life. Okay, so when you clean that energy, by default, that other person's reasons of that problem coming to him also gets cleansed. So again, it becomes like a win-win situation, no? That आप भी सफाइयां कर रहे हो उससे, you're cleaning that energy, नहीं तो वो आपकी लाइफ में absorb होगी. While at the same time, the other person उसकी लाइफ से भी वो साथ साथ मिटती जाएगी. It's basically just clearing and cleaning process. So when you do, I'm sorry, please forgive me for whatever that caused that experience to come to my life, and thank you. I'm like, thank you, and I love you to that issue. So you're removing that and you're planting thank you and I love you. So this is what cleaning means. So अपनी जिंदगी automatically clean होगी while at the same time उसकी भी problem. तभी तो डॉक्टर ह्यूलन जिस mental hospital में काम करते थे, अब 3000 उसमें prisoners थे and very serious cases. उसमें से सिर्फ 3 ऐसे रह गए जिनमें थोड़ी थोड़ी ट्रेसेस रह गए थे उस पर्टिकुलर इशू के, you know, जो उनके लाइफ में था. बाकी सब वो मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया, you know, like टोटली बंद हो गया क्योंकि वो रोज होपोनोपोनो कर रहे थे उन सारे प्रिजनर्स के लिए जो मेंटल हॉस्पिटल में जो प्रिजनर्स थे उनके लिए. सो इतना वो पावरफुल होता है, तो अपनी भी लाइफ क्लेंस हो रही है while at the same time उनकी भी होती है. So that's what it means. And कभी this, जीरो लिमिट्स आप पढ़ने की कोशिश करना, वो
बुक आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे है, Zero Limits by Dr. Joe Vitale and Dr. Hewlett, who were the founders. So Dr. Hewlett was the founder of this Hawaiian prayer, Ho'oponopono. And वो जो एक बुक है 6 hours की, उसमें 3 घंटे, वो 3 घंटे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो वो पूरी बुक है नहीं. So if you want to buy and read it, or you can read it on the YouTube, आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा डॉक्टर जो विटाले और डॉक्टर ह्यूलेन का. ओरिजिनली पढ़ना, डोंट रीड पीपल्स पर्सपेक्टिव ऑन इट. So ओके मैम, एंड है ना? वन थिंग मोर आई वांट टू आस्क कि अगर हम किसी दूसरे, जैसे अभी आपने बताया कि 45 डेज के लिए करना है, और सबके लिए 45 डेज नहीं है, कुछ के लिए 30 डेज होता है, कुछ के अगर बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है तो सबके लिए 45 डेज नहीं होता है. सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम किसी दूसरे के लिए करते हैं तो ठीक है, उसके लिए तो मैंने कर दिया, तो किसी और चीज के लिए हम अपने लिए भी सेम डे पे कर सकते हैं? हाँ कर लो, बट उसके लिए आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड लिख लो. अगर आपने ऑलरेडी ड्रीम लिस्ट में लिखा है, अगर बहुत ज्यादा फोकस के साथ अगर हम अपनी जिंदगी में और अपने लिए अगर करते हैं, सपोज कोई चीज मेरी ड्रीम लिस्ट में है ना, सो वो आप रोज पढ़ते ही हो, मतलब ड्रीम लिस्ट रोज पढ़नी होती है आइडियली, नहीं पढ़ते हो तो शुरू कर दो पढ़ना. सो वो अगर ड्रीम लिस्ट में अगर आर्डेंट डिजायर है, दैट फायर इन द बेली, दैट आई रियली वांट दिस, इसका मतलब है वो आपकी ड्रीम लिस्ट में है. अगर वो आपकी ऑलरेडी ड्रीम लिस्ट में है तो आपको उस पर जबरदस्ती और ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है. आप रोज उसको विजुलाइज करो, अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ के एक एक, एंड गिव दैट 5 minutes टू योरसेल्फ. तो इतना ज्यादा, बिकॉज उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस आने लग जाएगा. अगर आपको गुड फीलिंग हो रही है उसकी वजह से तो ठीक है, लेकिन अगर ये लग रहा है ये हो क्यों नहीं रहा, या मैं और करती हूँ इसके लिए, मतलब जोर आप तभी लगाते हो ना जब आपको अंदर से पता होता है कि ये चीज वर्क नहीं कर रही है मेरे लिए, या जल्दी से करनी है. तो it might just turn around to go away from your life instead of coming closer. So this is the reason I don't always like encourage to do too much for one particular thing. इसीलिए आप मुझे हर सेशन में सुनते होगे, I always say that car has got 4 wheels, and आप हैप्पीनेस के लिए करो, मनी के लिए करो, ट्रैवल के लिए भी करो, रिलेशनशिप के लिए भी करो, उसके लिए भी करो. वाइल यू कैन डू अ लिटिल एक्स्ट्रा, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो दीपा, किसी और के लिए, जो आपका डिजायर है राइट नाउ, किसी और के लिए कोई ब्लेसिंग्स भेजना, तो वो आप क्लेंजिंग ऑलरेडी कर रहे हो ना. बाकी चीजें आप अपने ग्रैटिट्यूड के थ्रू करो, वो भी बहुत पावरफुल होती है. तो कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम. यू कांट पुट योर foot into 2 boats at one time. It might not work. That's why. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Ma'am, Hanji at any Usha. time, Ho'oponopono can be done? Yeah, you At can any- do it randomly for 108 times if you don't have any burning issue in your life as well. Just like Okay. that, for a beautiful life. Okay. Hanji Usha. You'll have to unmute. Hello. Yeah, audible. Yes, I just want to say very, very, very thank you, ma'am. I'm so grateful to you. It feels that my whole life has changed. My thought process, everything. I feel so positive. And yes, बहुत सारी छोटे छोटे changes भी हो रहे हैं. I had such a wonderful vacation with my family. And there is one sharing. आपने एक बार बोला था कि आप जैसे बीच में अगर जा रहे हो तो आप ओशन में कुछ विश अपनी डाल देते हो. तो my niece wanted to join Taylor Swift's concert, In and she Singapore. had tried everything, but she was not able to arrange for the tickets. Then I told her that why don't you write this wish? And on New Year Day we were on Rishikesh. तो I said कि आप गंगा जी में ही ऐसे ही डाल दो. So she did that, and within 20 days, her wish got fulfilled, and she was so ecstatic and so thankful. So I am really thankful to you, ma'am. It's all because of you, and it feels really very nice. Great. Thank you so much for all your love and appreciation, Usha. This Yes, Taylor I'm- Swift has become so famous, my God.
Yeah, everybody wants to go to Singapore. I'm like all the Yes, and Indians when it she's was a going to Coldplay. Singapore now. Yeah, when it was a Coldplay concert on 23rd to 28th, that time, half of India was relocating to Singapore only to watch that concert. After that, in March, it is Taylor Swift, and in April, it is Bruno Mars in Singapore. Same in the main Singapore stadium. So even I feel like going so badly, but I don't know, like, I have work commitments. Like my calendar is so full that I would actually want to go for the Bruno Mars concert, because I keep sharing with you guys also about Bruno Mars. I'm a Millionaire, wala, that song that he had come up. And he's so mindful, about little things, and a very powerful manifester. So, like whatever he desires, like वो 10 साल का अपना स्क्रिप्ट बना के रखते हैं जिंदगी का. So मुझे बहुत मन था कि मैं ब्रूनो मार्स देखूं, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह अगर हो पाया तो हो जाएगा. So yeah, everybody go to Singapore. It's such a beautiful city. I'm in love with Singapore. Also because of the Singapore people we have here on our group. They're all so amazing. It literally looks like, I have a family now there. Right So, now she's in Australia. Acha from Australia, she'll go to Singapore. Yeah. But And it's one thing worth I going. wanted I mean, to this ask, is so ma'am. euphoric. Neetu had attended that Coldplay concert and she sent us videos on our Singapore group. So, like, we have Super Accelerated Living Singapore group also. So, on that group, she had sent all the Coldplay videos. So, Neetu, they were so amazing. I don't know how many times I've watched them. And I could feel that euphoria of just being there. It was so high. Just watching it, all those lights flashing and all that. And that sound and that energy you could actually feel. Nothing to beat the live concerts. They're amazing. So I'm glad, Usha, that your niece is going there for Taylor Swift's. Yes, Yeah. ma'am, and Some I'm of our so glad friends are for going her from as India well. for Taylor Swift's as well. There are many people I know who are going for Taylor Swift concert from India. Ma'am, one thing I wanted to ask, how can I join this group? I'm unable to do that. Join this group as in you're not in this group. No, means WhatsApp group. WhatsApp group. Yes, ma'am. Okay, so there's a link that you'll have to just click on that, or okay, I'll make you join. I mean, I have your number with me, no? Same number that I have of yours. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'll put you in the group right away. Okay, ma'am. And once again, I'm And, really, and you really also have to join thankful the to you. Telegram group. I will give you the link for the Telegram group also. वो आप अपने आप join करो, because slowly we'll be taking a transition from WhatsApp to Telegram. So we'll start using WhatsApp group lesser and lesser, because it cannot hold more than 1024. हमने जबरदस्ती इसमें लोगों को fit किया हुआ है, because हमने इतने लोगों को delete किया था who don't attend our sessions, regularly. Jabki they all follow here and there, they derive all their inspiration from whatever Priya and Soumya have been putting, the affirmations. So, but then there was no choice. Then we thought we'll shift to Telegram only. So हम दोनों group आपको join करा देते हैं. एक का मैं link भेज दूंगी और WhatsApp group में I'll add you right now. Sure, ma'am. Thank you so much, and thank you to Alright. everyone. Thank you so much. Bye bye. Have a beautiful Ma'am, good weekend. morning. Yeah. Yeah, ma'am, Thank Deepak. you. Thank you, ma'am. Thank Same to you. you, ma'am. Thank you. Thank Thank you, you. One Deepak. second, Deepa has So to much, ask ma'am. something. मैम आपने होपोनोपोनो बोला तो उसके लिए पर्सन वाइज उसका वो सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होगा या सब में वही है I'm कि सॉरी sorry, please forgive me. तो जब भी कुछ आप करो पहले डेक्लेरेशन कर लो, है ना? जैसे सपोज आपको करना है अपने भाई के लिए या अपनी मम्मा के लिए, ठीक है? या अपने लिए भी हो सकता है, कई बार कोई चीज नहीं बन रही है, जैसे आपको अपनी शॉप सेल करनी थी, जो भी. तो कोई भी चीज अगर आपके एक्सपीरियंस में आई है, देन यू हैव टू से आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन. And thank you. And I'm really sorry if there's anything that I've done, which attracted this situation to my life. And thank you. I love you for turning it around to make it really beautiful and whatever you want. Okay. And then you have to say like 10 or 15 minutes, ho'oponopono, like that. हमारी लाइफ से रिलेटेड करके करना कि हमारी एनर्जी और उसकी एनर्जी दोनों कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में और आपके एक्सपीरियंस में आ रही है, चाहे आप रोड पे जा रहे हो और आप किसने रैंडम पर्सन को आपने कुछ करते हुए देखा है जिसको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन आपकी जिंदगी में वो इंसिडेंट्स कैप्चर हो गया है ना, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो. तो आपके लाइफ से वो क्लेंस हो जाएगा और उस पर्सन की जिंदगी में वो बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के फॉर्म में जाएगा.
दैट वे उसकी भी एनर्जी, जबकि आप जानते नहीं हो उसको, उसकी भी एनर्जी उस चीज को लेके, जो भी उसका एक्सपीरियंस है जिसके कारण वो रैंडम पर्सन वो चीज एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका भी वो क्लीन हो जाएगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तभी मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप लोग डॉक्टर जो विटाले की जीरो लिमिट्स पढ़ लो, अपने आप से पढ़ो, एक बार समझो. एंड आई डोंट नो वेदर वो हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं, इंग्लिश में तो है वो. ठीक है, तो एक बार आप यू ऑल रीड दैट, दीपा, you can read the English version of it and understand a little more about how this works. Okay? Okay. Thank you, ma'am. Because of time limitation, I can actually tell you much more about it, but because of time limitation in the sessions, I may not be able to tell you for 3 hours, which Dr. Joe Vitale would be able to tell you with little experiences and everything. Okay? Ma'am, Hanji. hi, I found that book. I can send the link to it. Okay, you found that book. Then there are Yes. 6 hours, 3 hours repeat. So I don't know if it is a full book. You can please send Oh, it. I've got the PDF. I've got the PDF, so I can Oh, send the it. PDF you're talking about. So you can send it in the group. I cannot send it in the group because I'm not an admin. Who can I send it to? Oh, so you can send it to Priya or me. We'll put Okay, it, or okay, I'll send it Bharti, to you. anyone. Yeah, I'll send any it to one you. of us. I'll post it. You can send it to me right now. Yes, I'm sending it. Yeah. All right. Thank you so much, Sunidhi. Thank you No so worries. much. So all of us can have a weekend read for us this time. Thank you so much. Bye bye. Thank Have a you. beautiful Bye-bye. night. Thank you, Deepti. Thank you so much, ma'am. Thank you. Love